Hello and welcome to our channel Global 360. We are here to discuss on our topic history of subcontinent, which will be covered in different parts. Today we are here to discuss on time period 712 to 1206 AD. Well, it was the period when we will discuss today on the history of Muslim rulers, their rules, their rule of law, the religious and cultural differences, personalities, and the effect it had up till now. हम देखेंगे आज हम चार प्रोमिनेंट जो पर्सनैलिटीज़ होंगे जिनका हम जिक्र तफसील में करेंगे उनमें मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, अल-बैरूनी और मोहम्मद गौरी का जिक्र होगा। अलॉन्ग साइड हम रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ को भी आगे जिक्र करेंगे। एरियाज जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे कि प्रिवेलिंग सिस्टम में उनका क्या इफेक्ट पैदा हुआ, ऐसी क्या इम्प्रूवमेंट आई, रिलीजियस और कल्चर एस्पेक्ट पे भी हम एक एक पे आज बात करेंगे, जिसमें रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ का जो इस्लाम को सबकॉन्टिनेंट में फैलाने में क्या किरदार था हम उसको भी स्टेप बाय स्टेप आज देखेंगे और हम आखिर में इसको कंक्लूड करेंगे। हमारा पहला जो आज का डिस्कशन का टॉपिक होगा वो हमारा सब्जेक्ट है मोहम्मद बिन कासिम को। ये 695 से लेकर 715 तक उमैया डायनेस्टी का एक रूलर थे जो यंग थे अपनी एज में, और सब कॉन्टिनेंट में इन्होंने बाकायदा पहली दफ़ा अल-मंसूरा नामी एक किंगडम जो यहाँ की बुनियाद बनी थी, जो सिंध में इनकी राजा दाहिर के साथ मशहूर फाइट जो इसको रोटी का मैदान जंग और द बैटल फील्ड ऑफ रोटी के नाम से याद किया जाता है, इट टुक प्लेस देयर। ही वॉज अ बिट मॉडरेट इन हिज decisions, and he was the one who set up really the tone for the future in the subcontinent. He had extended his rule, not just he extended his rule, it was basically a system which was Islam, when the religious personalities and the political aspect conquered by themselves, and इन्फ्लुएंस ऑफ मुस्लिम्स यानी मुसलमानों की जहाँ पे जमात का बनना ही इस्लाम को फैलाने का मकसद बना था। हम इस वक्त नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स पे जिक्र नहीं करेंगे इनके रूल के, हम सिर्फ इस पे ही अपने आप को आज कन्फाइंड रखेंगे कि एक हिस्टोरी में एक बंदा आया था। मोनार्किज्म और उसकी सेटिंग्स, जिसको हमें पता है कि मिटे हैं नामियों के निशान, कैसे कैसे हर सिकंदर उदारा और हर जो महलाती जो पॉलिटिक्स और जो सियासत का जो मामला चलते हैं वही यहाँ पे भी हुआ और इनकी मौत का सबब भी बना। हम अभी जिक्र कर रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम के बाद हमारी अब पर्सनैलिटी जो आएंगी वो हैं महमूद गजनवी। ये 971 से लेके 1030 तक का इनका एरिया बनता था। ये बेसिकली इन्होंने कंदहार को जो था वो कॉन्कर किया था और ये इन्होंने गजनी को टुक ओवर कर लिया था प्लेस को। इन्होंने 1001 से मिलिट्री कैंपेन्स का आगाज़ किया था, एंड ही फॉट अगेंस्ट दी नॉन मुस्लिम इवन मुस्लिम्स बिकॉज फॉर द लस्ट ऑफ पावर और द लस्ट ऑफ इंक्रीजमेंट विच एवरी पॉलिटिकल रूलर हैज़ ऑन द साइड, बट the ultimate cause which happened was that because due to he was a Muslim or a Muslim rule, the Muslims increasement in the area caused the Muslim rule to expand and set up the tone for the future for Delhi Sultanate and the other one. Battle of Somnath was the most we can say the famous battle which जो यानी सोमनाथ की वो जंग जो आज ज़बान ज़द आम है, ये भी इसकी एक मिसाल रखती है। फिरदौसी पोइट, बहकी हिस्टोरियन, ऐसे लोग इनके दरबार के साथ मुंसलिक थे। यकीनन इन्होंने फाउंडेशन की एक बुनियाद बनी थी इनका होना शख्सियत में। हम अगला जो जिक्र करेंगे वो अल-बैरूनी का। ये 973 से लेके 1048 तक इनका पीरियड था। एक लर्नड मैन थे आर्ट्स में। इनकी किताबों को हम मुख्तसरन डिस्कस करते हैं, जिनमें उन्होंने लिखा था कि हिस्टोरिकल साइंटिफिक क्रोनोलॉजी पर, कानून मसूदी जो एस्ट्रोनॉमी और ट्रिग्नोमेट्री, एंड ऑन मेडिका ही राइट ऑन किताब सैदना, किताब जमाहीर which was on the properties of precious stones. He worked on the axis and rotation of earth at that time where the science was not that much and famous and propagating. Also he observed that there are never the flower of petal of flower have never 3, 4, 5, 6 or 18 petals, but 7 or 9, 200 books along the Tarikh Hind, which was one of his famous books. He was obviously a man of science. The picture of his is on the right side of the screen, which you can see. Well, then we get to Muhammad Ghori. He was the first Turk to invade India and set up the tone for the
Delhi Sultanate and then for the Mughal dynasty to come. His one of the Qutbuddin Aipak, which was to succeed him, was famous after him. He was the brother of Ghiyasuddin Balban, also a startup for the Delhi Sultanate we will discuss on later on. Now, religion diversity between 712 to 1206. Well, there was a Baitul Hikmah in 1813 to 1833 in the Baghdad, and the point I want to discuss here is that the Manke Hindi, which was we can say a learned magician, which was sent to Baghdad, where she treated the king of there. So this shows that how much rich was in knowledge this place, and we can see in Texlas and that old universities of Texla, which we will discuss some other day, there is also spiritual relief for Muslims of today to look for Baitul Hikmah, because of the prophetic saying that Ali is the door of Hikmah and I am the home of Hikmah. Also, all other religious personalities of them which are associated with the Prophet, peace be upon him, teaching are guidelines, or we can say the beacon lights for the Muslims of world. Well, Chiraman Juma Mosque 629 was the first one in Kerala, and it is to be said that this the Islam spread too far earlier than the 712. देयर वॉज अ ग्रेट डिफरेंस विच यू कैन सी. आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण और जो हिंदू कास्ट सिस्टम चाहे सती के जो सिस्टम होते थे और इस्लाम में जो इक्वलिटी का सिस्टम होता था, और ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग होता था, जिसने फिर भी हम देखेंगे कि लोग आपस में इकट्ठे रहे थे. आप मज़ीद इसकी सर्च कर सकते हैं ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह 600 साल पहले जो हिंदू जो वहाँ माशरे में सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन पे थे, यानी रूलिंग में थे, फिर एकदम से मुसलमानों का आया और दोनों की मजहबी और आइडियोलॉजी में इतना फ़र्क होने के बावजूद तो लोग साथ रहे थे. यकीनन इनमें रिलीजियस पर्सनालिटीज़, जिनमें दो मशहूर शख्सियात जो इस मुसलमानों के लिए थी, उनमें सैयद अली हजवेरी दाता साहिब, जिनका मज़ार आज भी लाहौर में बर सग़ीर पाक व हिंद का सबसे बड़े मज़ारों में काउंट होता है, और इन्हीं के मुरीद रूहानी जिनको हम कहते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, और हु गिव्स टू द पुअर बिकॉज ही इन हिज वी कैन से, जो इनके दरबार में कभी भी गरीब और अमीर या मुसलमान और गैर मुस्लिम का फ़र्क नहीं होता था, बल्कि हर एक को वहाँ पे खाना और जो उसकी मुराद होती थी वो मिला करती थी. और यही वो वजह है कि आज भी अजमेर इन इंडिया द biggest we can say the food provider is not by any of the government agency, but that very shrine which gives the food to the people irrespective of their creed or religion. Again, culture diversity between जो हमने जिक्र कर चुके हैं कि किस तरह अल मंसूरा का एक सल्तनत की बुनियाद रखी थी, और जो ईरानियन ग्लासवेयर था जो मुस्लिम कॉन्केस्ट के बाद जो सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद आया हुआ, और ग्लासवेयर के वहाँ से जो कॉन्सेप्ट आए थे वो मुस्लिम्स के एक्सटेंशन ऑफ रूल के बाद इधर भी वहाँ से आर्टिशियंस आए और उन्होंने काम किया. उर्दू जिसको हम कहते हैं ज़बान लश्कर, यहाँ विच इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ होरी द फर्स्ट टूर केम, द मुस्लिम अरबिक्स फ्रॉम द अरब्स केम, द हेयर द संस्कृत लैंग्वेज विच अल बैरूनी ट्रांसलेटेड, it formed ultimately a new language, Urdu, still in working in Pakistan. Ethics and moral 180-degree different, because there was sati, here was polygamy, here is a polygamy where a man can in India it is not in Hindu religion. और भी हम देखते हैं कि उनकी शलवार कमीज़ का कल्चर वो आज भी सरप्राइजिंगली उन्होंने साथ रहे, और आज तक शलवार कमीज़ का कल्चर एक है. डिशेस का जो आपस में उनका मिक्सचर हुआ था, जिसमें आज भी वो डिशेस, कड़ी जिसमें एक मशहूर डिश है which we can still see in both of the countries, और a mixed lifestyle आज भी follow हुआ है with pros and cons obviously. Now I may conclude this that major changes of these rulers और जो impact था we have already discussed. You may want to see another, we will sum up there after the history is completed. Personalities, we have already reflected that the subcontinent that affect the subcontinent in 21st century still be it religious, be it philosophical, all have contributed a lot. Thanks for watching. Subscribe to our channel, share it, like it, and give us suggestions in the comment box. हमारे साथ रहिएगा, अगली वीडियो तक आपसे मुलाकात होगी.